अड़ियो मैं कित्थों ल्यावा गन्ना, इस वेले अड़ियो मैं कित्थों ल्यावा गन्ना। दम पीड़ा उठे जी दम पीड़ा उठे, दम पीड़ा उठे जी दम पीड़ा उठे, दम पीड़ा उठे जी दम पीड़ा उठे, दम पीड़ा उठे जी दम पीड़ा उठे। वगदी जिरावी विच कुग्गियां दा जोड़ा वे, वगदी जिरावी विच कुग्गियां दा जोड़ा वे। इक कुग्गी उड़ी लम्मा पै गया विछोड़ा वे, इक कुग्गी उड़ी लम्मा पै गया विछोड़ा वे। दम पीड़ा उठे जी दम पीड़ा उठे, 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 दम पीड़ा उठे जी दम पीड़ा उठे।
15 दिसंबर 2022 और ये आज का 213वां 239th एपिसोड ऑफ कहते सुनते is going to be on air now. We are live on 89.3 FM 2GLF in Sydney और हम लोग फेसबुक पर लाइव हैं, हम लोग यूट्यूब पर लाइव हैं एंड ऑफ कोर्स अगर हम लोग 89.3 पे आप लाइव नहीं सुन सकते तो नहीं नॉट यूट्यूब ट्यून इन पर भी हम लाइव हैं. सो बहुत सारे जरिए हैं सुनने के एंड फेसबुक पे लाइव हैं, यूट्यूब पर भी लाइव हैं. सो ये कार्यक्रम का नाम है कहते सुनते. मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और हम लोग ये कार्यक्रम हर थर्सडे नाइट को 8 से लेकर 10 बजे तक लाते हैं सिडनी टाइम से, 8 से 10 रात के. एंड इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की बातें होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की बातें होती हैं, मुख्तलिफ एंड अलग अलग बातें होती हैं बहुत सारी. कई बार मज़ाहिया बातें होती हैं, कई बार गंभीर बातें होती हैं, सीरियस बातें होती हैं, बट एंटरटेनिंग या एंगेजिंग बातें होती हैं. और नीरज नंदा जी हमारे साथ जुड़े हैं मेलबर्न से. नीरज नंदा जी फ्रॉम साउथ एशिया टाइम्स एंड ऑफ कोर्स सृजनी वाज इट सेड शी इज़ वाचिंग. आई होप यू स्टिल देयर सृजनी. इफ़ यू आर नॉट, बाकियों को बता दूं कि सृजनी इज़ द लता मंगेशकर ऑफ सिडनी, आई वुड से लता मंगेशकर ऑफ ऑस्ट्रेलिया. एंड सो ये सब है. आज कार्यक्रम में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या होने वाला है आज 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से. और हम लोग भी माइग्रेंट्स हैं, आप भी कई सारे लोग इनमें माइग्रेंट्स होंगे ऑस्ट्रेलिया में जो रहते हैं, इंडिया से जो आए हैं. सो इट इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ माइग्रेंट्स एंड इसके बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ होंगे बाबू गोगिनेनी, जो कि एक he's a social worker, he's an activist, he's a humanist एंड बहुत सारी और चीज़ें करते हैं. तो वी विल बी टॉकिंग टू हिम अबाउट माइग्रेशन, द पॉलिटिक्स एंड उसके आसपास की क्या स्टोरीज़ हैं. एंड जैसे माइग्रेंट्स होते हैं, हम सब माइग्रेंट्स रहे हैं कभी ना कभी शुरू में. एंड वी आर द मोस्ट वल्नरेबल. जब माइग्रेंट्स होते हैं तो वी आर वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स, क्योंकि आप आते हैं अपना घर छोड़ कर, अपनी पूरी जो हिस्ट्री है वो छोड़ के आते हैं यहाँ पर. आजकल थोड़ा फ़र्क पड़ गया है, जैसे कि जो लोग आईटी के बिजनेस में काम करते हैं या ना जो सॉफ्टवेयर दिस दैट, तो द वर्ल्ड इज़ देयर ऑयस्टर. तो अगर वो इंडिया में भी काम कर रहे हैं वो सेम काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे आके भी इट इज़ द सेम थिंग. सो दे डोंट लूज दैट मच हिस्ट्री. लेकिन जैसे हम लोग जब भी आए थे, मैं यहाँ पे 25 साल पहले आया था, तो उस टाइम पे यू कम एंड यू लूज योर हिस्ट्री, क्योंकि आपको आपने जो किया था शुरू, दैट डजंट गेट रिकग्नाइज्ड हियर. एंड सो इट्स क्वाइट डिफरेंट टू कम एंड री इन्वेंट योर सेल्फ, कि हर बात में आपको अपना आइडेंटिटी ढूंढनी पड़ती है. एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स, स्पेशली जो रेफ्यूजीज होते हैं एंड दे फेस इवन वर्स सिचुएशंस. तो हम लोग माइग्रेंट्स की बात करेंगे एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे साथ में मैं ढंग की बात करूंगा आज. और ढंग की बात में कि भाई पिछले हफ्ते एक छोटा सा प्यारा सा इंसिडेंट था. मैं अपने दोस्त के साथ कहीं डिनर पे गया एंड वो छत पे थी जगह जहाँ पे हम डिनर पे गए. और डिनर के बाद मैं और मेरे दोस्त खड़े होके जो छत की दीवार से वी कुड सी सिडनी वहाँ से, लेकिन ऑल्सो जो उस बिल्डिंग के नीचे जो चीज़ें थी वो हम देख रहे थे. ट्रेन चल रही थी, टैक्सीज थी, लोग चल रहे थे, एक दूसरे को बुला रहे थे. शाम का वक्त था, अंधेरा था एंड इट वॉज रियली ब्यूटिफुल, क्योंकि मैं भूल गया था कि कहीं से खड़े होके लाइफ को देखना. हम लोग अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में भूल जाते हैं, अपनी खिड़की से बाहर देखना भूल जाते हैं कि क्या हो रहा है. और अगर देखते भी हैं तो वी जस्ट सी कि भाई मौसम कैसा है एंड वी कम बैक. लेकिन विंडो के बाहर देखना कि क्या हो रहा है एंड उसको एब्जॉर्ब करना, उसमें एक अलग मेडिटेशन थी. सो आई हैव रिटन अ स्मॉल थिंग अबाउट दैट, वॉचिंग द वर्ल्ड थ्रू द विंडो. why is it good for you? And then of course नीरज नंदा जी आएंगे, he'll talk about Indian and Australian news, और वो आपको ग्राउंड से इंफॉर्मेशन ला के देते हैं. साउथ एशिया टाइम्स बहुत बैलेंस्ड न्यूज़ देते हैं, ही डजंट सेंसेशनलाइज एनीथिंग. एंड ऑफ कोर्स उसके बाद में क्रिस मल्लिका भद्रा आएंगी. और मैंने जैसे कहा है कि भाई क्वेश्चन पूछा है कि आपकी फिल्मों का क्या recommendation है. So I have started that question. So if you have any recommendations
फॉर मूवीज़ जो आपने OTT वगैरह पर देखी हैं, सो बताइएगा कि व्हाट योर रिकमेंडेशंस, और मैं अपना रिकमेंडेशन दूंगा. एंड ऑफ कोर्स नीरज नंदा जी ब्लर कह रहे हैं ऑन Z5 ग्लोबल, ब्लर. एंड सो या इट्स, और उनके पोर्टल पर southasiatimes.com.au पर उन्होंने इस फिल्म का रिव्यू भी किया है. सो ये सब होगा, बहुत सारी और बातें होंगी हल्की फुल्की. और आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो यू लेट अस नो, अपने फेसबुक से कमेंट कर सकते हैं, या आप यहाँ पर 0449 004 053 0449 004 053 यहाँ पे व्हाट्सएप का नंबर है. इन केस आपको जुड़ना है हमारे साथ, तो you can send a message on WhatsApp, and we can bring you live on air. So don't go away. Some music, and then of course we will talk to. Okay, what happened here? Yeah, so we will then talk about many different things that are happening in your life and my life and everything else. सो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कहते सुनते. मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और ये कार्यक्रम 89.3 FM 2GLF सिडनी पर आ रहा है. एंड वी आर ऑल्सो लाइव ऑन फेसबुक एंड यूट्यूब. मैं उस दिन घर में बात कर रहा था कि कई लोग जब काम करते हैं ना, चाहे वो आप नौकरी करें, चाहे बिजनेस करें, चाहे कुछ करें, तो उस
instead of enjoying that work, they make it a big हवा कि मेरा काम, मैं इतना बिजी हूँ, मैं इतना परेशान हूँ, मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ, एंड यू थिंक वेल, या तो उनको बोलो कि भाई सोशल इवेंट, नहीं यार काम बहुत है, या बोलो कि भाई अच्छा तूने फ़ोन नहीं किया, यार मैं बहुत बिजी था. सो हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, एंड व्हाट माय व्यू इज कि आप लोग जो भी काम करते हैं, मैं भी काम करता हूँ, आप दिन में 8 घंटे काम करते हैं. हो सकता है आप बहुत डेडिकेटेड हैं, आप 10 घंटे करते हो, या आप उससे भी डेडिकेटेड हो तो आप 11 घंटे करते हो. इधर उसको आपको वो 11 घंटे के पैसे मिल रहे हैं तो भी आपको कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो आपकी मर्जी से आप कर रहे हैं कि भाई आपको 11 घंटे के पैसे मिल रहे हैं तो यू शुड बी हैप्पी. और अगर आपको 11 घंटे काम करने के पैसे नहीं मिल रहे हैं तो यू शुड बी क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि मैं क्यों कर रही हूँ ये काम. अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं और आपको 15 घंटे काम करना पड़ रहा है तो दैट्स योर डिसीजन, बट दैट शुडंट मेक यू वरिड, इट शुडंट स्ट्रेस यू. अगर वो स्ट्रेस अच्छा नहीं है आपके लिए, इफ इट डजंट गिव यू जॉय, आई मीन वी ऑल स्ट्रेस, एंड थोड़ा सा स्ट्रेस होना अच्छा भी होता है, या चैलेंज बोलते हैं ना. अगर काम एकदम आसान हो जाए तो यू विल लूज मोटिवेशन, यू विल लूज इंटरेस्ट. ओके, सो काम में स्ट्रेच होना चाहिए थोड़ा सा. अगर आप 10 चीज़ें कर रहे हैं तो अगर आपको 12 करनी पड़े तो थोड़ा स्ट्रेच होता है, थोड़ा इट मेक्स योर वर्क चैलेंजिंग एंड एक्साइटिंग. एंड चैलेंज होता है तो वी एज ह्यूमन बींग्स हम लोगों को मजा आता है. लेकिन अगर इतना चैलेंज है कि आप 10 कर रहे हैं, आपको 25 करनी पड़ रही हैं चीजें, तो देन यू नीड टू क्वेश्चन कि भाई ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं क्या सही जगह बैठा हूं क्या. नो. अभी जैसे मिसाल के तौर पे मैं पूरा दिन काम करके अपना जो भी माई वर्क, आई कम होम थर्सडेज को, आई डू दिस फॉर, एंड दिस टेक्स मी अबाउट 3 hours ऑन दिस रेडियो. 2 घंटे करता हूँ, और आस पास उसके पहले करो बाद में करो तो 3 एक घंटे उसके पहले प्रेप करना पड़ता है. तो आई एम स्पेंडिंग अबाउट 6-7 hours अ वीक ये शो के लिए. 2 घंटे का शो है लेकिन 3-4 घंटे और लग जाते हैं मुझे तैयारी करने में, रिसर्च करने में, लोगों से बात करने में. सो आई डू दैट, बट बिकॉज इट गिव्स मी हैप्पीनेस. और ऑफ कोर्स मेरा दिन लंबा हो जाता है. सुबह आई स्टार्ट माई डे से, आई गेट अप एट 6 o'clock, और शाम के ये 11 बजे तक आई एम डूइंग दिस ऑन थर्सडेज. सो आई हैव अ लॉन्ग डे, बट आई डोंट कंप्लेन अबाउट इट बिकॉज आई एंजॉय इट. लेकिन कई लोग, और अगर आप भी, आपको लगता है कि आपका काम और लाइफ का बैलेंस खराब हो रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्वेश्चन कि भाई ये मैं क्या कर रहा हूँ, इज इट वर्थ इट. हाँ, आपको पैसे मिल रहे हैं और आपको चाहिए वो पैसे, तो ठीक है. अभी जैसे मैं जानता हूँ कई सारे लोग दे विल डू डबल शिफ्ट्स, एंड दैट्स ओके, गुड ऑन देम. बट देन दे कांट कंप्लेन कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ. तो मत करो, दैट्स अ चॉइस. एंड आई मीन इफ इट अफेक्ट्स यू, बट इफ इट अफेक्ट्स यू सो मच कि आप जो अपनी रोजमर्रा की जो आपको खुशियां देती हैं चीजें वो नहीं कर पाते हैं, सो यू नीड टू क्वेश्चन दैट, आई थिंक, फॉर योर ओन सेफ्टी, फॉर योर ओन हेल्थ. ओके, हम सब ने, एंड एज माइग्रेंट्स, जैसे अभी इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे होने वाला 18 को, और जैसे मैंने बात शुरू की वहाँ से कि हम लोग सब लोग एज माइग्रेंट्स, हम जब भी आए थे तो वी डिड मैनी थिंग्स दैट यू वुड नॉट नॉर्मली डू, एंड यू डिड इट, एंड यू डिड इट, एंड यू गॉट गुड हैप्पीनेस आउट ऑफ इट. उसमें फ़ायदा हुआ, ठीक है, और किया और मज़ा आया, तो उसमें कंप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है. एंड इफ़ यू हैव टू कंप्लेन अबाउट योर वर्क, प्लीज़ रियलाइज कि आप 8 या 10 घंटे से ज़्यादा काम में मसरूफ़ नहीं हो सकते हो. इट स्टिल गिव्स यू 14 hours टू डू अदर थिंग्स, जिसमें से 8 घंटे आप सोएं, 5-6 घंटे आपको फिर भी रोज़ मिलते हैं टू डू प्रोडक्टिव थिंग्स. उसमें शॉपिंग भी कर सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, नेटफ्लिक्स देख सकते हैं, जो भी. So you can have a rich and meaningful life with work, but don't think कि आपकी पूरी लाइफ काम है. आपकी पूरी लाइफ काम नहीं है. काम is only a means to an end. आपका काम कितना भी मीनिंगफुल हो, it is just a means to an end. Okay? आप, हो सकता है कि आप सोचते हो कि आपके बिना आपकी ऑर्गेनाइजेशन चलती नहीं है. ये सबसे बड़ा भ्रम है आपके दिमाग में, वहम. There is no organization that does not work without a person. Okay? अगर ऐसा नहीं होता तो लोग मर भी नहीं पाते. Okay? Because once you are dead,
then the world still goes on. Okay, तो वैसे ही आपको काम अगर आपको छोड़ना पड़े या आपको छुट्टी लेनी पड़े, कोई काम बंद नहीं होगा. Companies work on this principle कि you are not indispensable. Okay, कि आप अगर चले भी जाएं काम छोड़ के तो कंपनीज बंद नहीं होती, उनके काम बंद नहीं होते. Okay, so लेकिन don't let work stress you. Work should give you happiness. If it's not giving you happiness, you need to question whether you're doing the right work. Okay, so don't. And I detest it जब मुझे लोग कहते हैं बड़ा काम है यार, बड़ा काम. अरे यार मैं भी काम करता हूँ यार, and I still manage to do other things. Okay, or maybe you're not as you're not pushing yourself. But anyway, that's that. And Michelle is watching. Hello, Michelle. He says great music. Thank you, Michelle. Thank you for watching, and thank you for your encouragement. And Michelle is he does a lot of work. हमारे 89.3 FM 2GLF. He's one of the people behind the scenes. He's the treasurer. And thank you, Michelle, for making this show possible. And of course, Zahid Minas, हमारे दोस्त. He's also watching. Zahid Minas is, he does Radio Dosti, and he's trying to make Indian and Indian and Pakistani जो हमारे communities हैं, उसके अंदर वो दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. Monday nights को he's on Facebook doing his show. And Ingita Thakkar ji is watching. Ingita ji, कैसी हैं आप? It was a pleasure to see you some time back on that show that we just went to. क्या था उनका, वो सिंगर है जो that lady singer. So anyway, so we met. And Zahid कह रहे हैं कि शौक दा कोई मूल नहीं. तो obviously शौक, जैसे मैं काम कर रहा हूँ ये वाला रेडियो का, तो ये शौक दा कोई मूल नहीं. Thank you for that. And Zahid भाई भी बहुत सारा काम करते हैं and शौक भी पूरे करते हैं, तो I'm sure उसका भी कोई मोल नहीं है. So thank you for watching everybody. And अगर आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो बताइएगा. हो सकता है, do you agree with what I was saying about work? कि भाई ये काम का ना, don't make this such a big drama यार, कि मेरे पास काम बहुत है. Everybody, सबके पास काम है, सबके पास घर का काम है, सबके पास काम का काम है, सबके पास फैमिलीज का काम है, एंड सबके पास अपना नेटफ्लिक्स देखने का. जिसको पूछो ना टाइम नहीं है, तो वो रोज आपको बता सकता है कि 3-4 घंटे दे वॉच नेटफ्लिक्स, बट फिर भी टाइम नहीं है. एंड दैट्स माई ग्राइप. एंड जाहिद कीप वॉचिंग. आज आप क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ माइग्रेंट्स है 18 तारीख को, हम लोग उसकी बात करने वाले हैं, तो जाइएगा नहीं. प्लीज स्टे ऑनलाइन, प्लीज कीप लिसनिंग टू द म्यूजिक. इन सम टाइम आई विल ब्रिंग बाबू गोगिनेनी एंड वील टॉक अबाउट द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन राइट्स. So don't go anywhere. दूर तू ऐवे जाना सजना छड़ मैनू, दूर तू ऐवे जाना सजना छड़ मैनू, वारों वारी कहना सजना छड्डण नू, वारों वारी कहना सजना छड्डण नू. जे दिल मेरे तो जावे सजना तां मैं मन जा तैनू, जे दिल मेरे तो जावे सजना तां मैं मन जा तैनू. या तेरी हुन नित मैनू तड़पावेगी, तू ना आवे यादा तेरियां आवेगी. या तेरी हुन नित मैनू तड़पावेगी, तू ना आवे यादा तेरियां आवेगी. वे मैं जान नहीं देना यार तैनू, तेरा नहीं एतबार मैनू, मैं जान नहीं देना यार तैनू वे, तेरा नहीं एतबार मैनू.
ਜਾਵੇ ਸਜਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਜਾਵੇ ਸਜਣਾ सो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, कहते सुनते, और इट्स वेरी फनी, लेकिन मिशेल हैज रिटन थैंक यू फॉर द काइंड कमेंट्स. मनबीर जी, where did you learn that, Michelle? Thank you for that. And Zahid Minaz says, work is not your life, work is part of life. That is so true. And of Kulraj, Mohan कह रही हैं कि I am absolutely welly and watching you. No, nobody is welly, but thank you for being there, Kulraj. Good to see you on the show. And it's also good to see Babu Gogineni. And Babu is he's a social worker. He does activism, and he's a humanist. And I've got him online on Zoom, and we're going to talk about International Migrants Day that's celebrated every year on the 18th of December every year from the United Nations. So Babu, welcome to the show. How are you doing? Thank you, Manbir ji. How are you? So tell me, what is this International Migrants Day? Why does it need to be recognized? Look, migration is the condition of all life. Mm-hmm. We see migration in biological life. We see, this what is called one of the 7 natural wonders of the world, the migration of the wildebeest in the Masai Mara in Kenya when they cross the Mara River. That's 1.5 million animals jumping head over heels along with 300,000 zebra in July, August, and coming back in October. We have 65 million red crab which migrate in the Christmas Islands. Yes. So they do it for breeding, they do it for food. We know that whales can travel 4,000 kilometers just for the calving season and come back. And in the in the human populations, society is a human herd, and societies migrate. We have traditionally migrant populations. We call them either Banjara, Lambada, or the Romas, and that's their way of life. So migration happens all the time. Today, obviously, we're talking the UN's International Migrants Day is about the human beings. It's about the 270 million people around the world. That's 12 times the population of Australia. 270 million people who are living in countries other than the country of their birth. So these are all people born somewhere and have moved here. About 10% of these are refugees. But about a third of these are people who may not be refugees, but who have been forced to migrate. Now, you and I might refer to migration as people who have taken their skills abroad, who have found a job, a citizenship, a permanent residency, an opportunity to work, to study. This is the happier side of migration. Yes. And there is a really good, happy side to migration. Around the world, this phenomenon of migration, it could be because people are escaping a war or a climate crisis or oppression or going for education or a job or family reasons, marriage, and so on and so forth. Of all these things around the world, when we talk migration, immigration,
we have a very toxic dialogue that develops out of it, a politics that is repugnant to any modern mind. Now, when we say migration, and we talk of international migration, which is the 18th of December, Yes. we tend to forget that many times more than this 270 million international migrants is the story of internal migration, domestic migration Yes. in a country. Yes. Most of India became aware of this, woke up to it when Prime Minister Modi suddenly shut down the country at 4 hours or 8 hours notice Yep. and asked people to go back home. And then the immensity of the problem was not simply about a government acting without sensitivity or taking care of the vulnerable. It showed us the number of people in India living away from the city of birth or where their regular families live. They were not living with them. We also know that something like 55 to 60% of these migrants are male. So, what does this mean? That This the women means are not with them. these are single people with sexual needs, and their behavior can be objected to or creates an opportunity. Now, these bring tensions and troubles. Transposing this to the international scene, when 1 million people from Syria were accepted as refugees in Germany, while there was some factual basis, there was Yes. an alarm that the migrants were raping the German women that Yes. they came across. Yep. There is some crime that was reported, but like all things that are scaremongering, people try to create this xenophobia, which is mostly seen in the rich countries. Yep. We see that in the relatively poor countries, adjusting to the migrant, to the newcomer, if religion is not interfering, and if language has not been a matter of dispute, then people have been welcome. People migrate because they're escaping something or because they're seeking opportunity. Yes. So, this is an extraordinary phenomenon that now we can put some figures to in the modern world. We have the International Organization for Migration, which is now a specialized body of the United Nations. It started independently and it became part of the UN. And really, we are talking 270 million people. Now, here is the interesting data I would like to share with you, Manbir. The ones who have migrated already are 270 million. But the desire to migrate to a country that they were not born in apparently resides in an additional 750 million people. Really. That's 1 billion people Want to move. Yeah. potentially wanting to migrate, and a quarter of them have already done so. So government policies, our social perspectives, our efforts to integrate people into societies in a nice, friendly way. Not that everyone has to just change to the ways of the host country, except where it's a question of law and order. How do you make sure this happens? Because remember, the 10th of December was International Human Rights Day. Yes. And we have the 30 articles of the Universal Declaration of Human Rights. Yep. You can put all the moral books and the books of religion in a tarazu on one side
all of the religious books Yep. on one side and put these 30 articles on 2 pages on the other. This weighs heavier because this is built on human rights and human values, which are universal. Absolutely. Now, what rights do these migrants have? The current 270 million or the potential 1 billion migrants? They are entitled to all the 30 rights in the Universal Declaration of Human Rights. Now, what do host countries do? What are their responsibilities to ensure that these rights are not damaged? Funnily, that's for international migration. That seems to be the problem of English-speaking countries. Because most of the migrants now that we are tracking are migrants who want to or have gone to the United States of America, to Canada, to Australia. And we see that these are all English-speaking countries. Yes. New Zealand too, but the numbers are not so serious. So this becomes a task for the English-speaking countries, which of the Western world, of the rich North. They are welcoming people. They are benefiting from migration. There is, on the one side, terrible rhetoric, very anti-human rhetoric, attributing crime to migrants, attributing disruption of social life, of public services, putting extra pressure on local societies. Resources. Yeah. Blaming all of this on the migrants. Yep. You know what? I don't mean it in an offensive way, not at all. But it's true of migrants that migrants are criminals only in the case of Australia, because they sent the criminals here to settle this country. Yep. But that's only as a curiosity I mentioned that. In general, unless it is forced migration like this, and that was forced migration. Yep. Those who were to be in prison cells in the United Kingdom were sent to Australia to settle here. But 1973, Australia closed down the whites-only policy, I think. That's right. And what we see is that 1973 to now, the population of the country has more than doubled. The economy has grown 21 times. Yes. So this is the strongest argument against those who are spreading fear and trying to attack the migrants. But cultural adjustment still remains a challenge. Yep. Now, look, I like the way you started this with, the migration of the wildebeest, and then of course, birds migrate and animals migrate and whales migrate. I hadn't thought of migration from that perspective. But of course, if you look at India itself, India is a story of migration. You had the Aryans who migrated into India. There are different theories about that, but I accept that, yes, they did migrate from wherever they did. And they brought a lot of culture, and of course there was a residual culture there in the south. They interacted with that, they mixed, or whatever happens in a migrant situation. But India owes a lot of its culture to migration. Now, what I wanted to point out to you is that even I am a migrant, and as migrants, we are quite hypocritical in our approach. Okay, so when we migrate, we want the human rights to be respected, our human rights to be respected. We want to be treated equally. We want to, not give up our culture to fit in, like you said, that, okay, as long as it is the law, as long as you're complying with the constitution of the country, you're a good migrant. You can do everything else.
As there are some countries who are not as crazy about this, and they let you do things. Australia is a good model, but obviously it also has a lot of weaknesses. When we come here, we want equality. We want everything done as per protocol. But when we go back to India, we do not want to give the same rights to the internal migrants, like you said. There we see, no, this guy is coming from Bihar. He's bringing his religion. He's bringing crime. He's taking away, local jobs. He's creating crime. So we do the same thing to people who migrate. So I think it's all about wanting the best treatment from people above you. When I say above, as in people that you're dependent on, while people who are below you, not in that human scale, but in the economic or vulnerability scale, yeah, you want to press them. So do you think my observation about this hypocrisy, and of course when we come here, we also don't want more migrants from the same country that we came from, yeah, and that is said about migration, that the last migrants want to close the door the first, कि अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, we don't want more Indians to come. So, and sometimes I also think like that. Yeah, I ran away from these guys, and these guys are still, so, but we are quite hypocritical, and this is a universal phenomenon, don't you think so? Absolutely, Manbir. I want to say one thing. Not just India, all of humanity is migrant population from Africa. Yes, now, the earliest humans that we can call human were probably about 300,000 years ago identified. I'm talking Homo sapiens sapiens in Eastern Africa. And of course, even earlier, if you look at the great fossils of the extraordinary story of Lucy, 3.2 million years old. But Australopithecus afarensis, not our species, but our ancestor. Now, from then, it evolved, the species evolved, or the living organisms evolved to become bipedal, evolved to stand straight, have eyes in the front of the head so you can see things, the brain developing. All that culminated in the identification for us 300,000 years ago of Homo sapiens sapiens. 70,000 years ago, the Africans, our ancestors, the first humans, decided to walk. And they were able to carry water in hollowed out gourds. And they poured water in it. Therefore, they did not have to go back to the watering hole. They could walk. And they did that for 20,000 years. They peopled and settled India, South Asia, Oceania, and Africa. Australia is settled by the Africans of that time. So that's one. When you ask me about the migrants and their attitude and their approach, obviously we have the common shared experience of India. So it makes sense to talk about that. A very disturbing news to me is Mrs. Khobargade has been appointed ambassador of, I think, Indian ambassador to Cambodia. Think about 10 years or 12 years, I forget exactly when, she was arrested. The diplomat was arrested in the United States for keeping an Indian origin fellow Dalit as a slave. So just let that sink in. That she escaped because she had diplomatic immunity. But she had violated the United Nations standards of human rights, of Indian law. Indian law doesn't. Now, there was a time when the British
along with the rest of the Europeans, were forced because of the terrible atrocities of King Leopold of Belgium in the Congo Basin, were forced after a conference in Berlin to abolish all slavery. Then what do the British do? They take 2 million Indians as indentured labor because slavery is no longer allowed. Yeah. It's the same hypocrisy that continues, Correct. not just amongst the dominant white people and Western people, but like, as you sadly pointed out, those of us who have done better than the others in our societies, and those of us who have left our societies, we carry the cultural baggage. It's a terrible thing. It's an atrocity against humanity to be doing this. Every person from India or outside India who is casteist is committing a crime against humanity. Yes. Import casteism into Australia, with reference to Australia, is to import illegality and a crime against humanity into this geography. And the hypocrisy remains because most of these people are simply looking for a better economic opportunity. These are not social workers. These are not out there to contribute to the moral and intellectual development of humankind. They are simply to earn a better life. True. They have not been coached right at home because all discrimination, the seeds of that are sowed at home. How you treat your domestic help, how you treat the driver. I'm assuming these are rich people able to afford this. And from there into schools and in society, how politics is organized around the caste system, how the culture of inequality is a question of glamour rather than one of shame. So how many people you can command at your beck and call is an indication of your strength. Now, there is this French man who said, there is never a dignity in being a master, and there is never a loss of it in being a slave. As a society, as a country, as a culture, we are yet to pick that up in our own societies of origin. This is a sad thing. There have been marginal improvements through, let's say, softening of the caste system, let's say, adjustment of the cruelty of the caste system through modern law, through criminalizing behavior. But many people, and I'm aware of it, it happens in Europe, it happens in Australia too, that people are able to carry on discrimination because the local laws have not adequately recognized this violation of human rights. I don't think they contemplate it or they tolerate it. It's just that they are not Ready, adequately equipped. sensitized to this. So my response would be, people don't come here to become better humans. That's not the original intention. Some people escape the dangerous laws back home. That happens in all countries. Yes. But very few are primed up with the idea that they should leave the world a better place than the one they came into. And this requires a special sensitization that we have a moral responsibility, not just to our families, but to the society which made our growth possible. true. That we should give back something to people. Excellent. This is a civilizational challenge, Manbir. I don't think it can come simply just like that. It needs to be part of the educational system. It needs to be part of going beyond the religious society so that people can have values. Yeah, so it's not
it's not about education. It's about an insight. When I get treated better than the treatment that I give people who are vulnerable, I need to be insightful and say, hey, this is actually the way that I should be treating somebody else. It's a basic insight. And if people lack that insight, I think it's about time that we talk about it. And I'm sure we talk about it all the time. But we need to talk about it. We need to call out such behavior of people, and uh, when they expect to be treated one way in Australia, but we don't treat the same vulnerable people back in India, in the same manner. We don't give them the same dignity. We don't give them the same rights as migrants. So I don't think that's rocket science or that you need to have done a master's in social work to understand that. It's just basic. But what I'm hopeful of is that the next generation of our children, they are growing up here, and that is what is their basic framework. They are operating within that framework where there is some dignity. And when they go back to India, or when we take them to India, and they see that dichotomy in the treatment that we give, they immediately call it that, no, you can't talk to that person like that. And I think that's a real sign of hope. But migrants contribute a lot, and it's in every society, like you said, even Australia, the economy has grown. And we don't need to feel guilty about migration, I think, as migrants. We need to be proud of the fact that we are bringing good skills. And if we came here and we were saved because we were escaping some laws, we need to still be proud that this country recognized that. And I think the good migrant is somebody who adheres to the constitution. They don't have to speak English. They do not have to speak, become Christian. They don't have to do anything like that. All you need to do is to believe in the constitution, and you will be a good citizen of that country. There's an important thing, Manbir, in what you said just now. It is that very often citizenship, which gives you political rights Yes. and stability in a society, and migration are not completely directly aligned. And this creates tension. This is something that needs to be observed and adjusted, I think. Talking of India, we know that this Ministry of Home Statistics shared in the parliament in India that 160,000 people holding an Indian passport, 160,000 people renounced their Indian citizenship in just 1 year, 2021, and took up in favor of the US, Canadian, Australian, and UK citizenship. Tells us something. 160,000 people from India renounced their citizenship and moved on. We are talking about the CAA and legislation for citizenship and so on. Yes. We have seen how the Rohingya refugees in India are maligned. So much of negative thinking and hatred is spread against them. Yes. A refugee has come to you for succor, for help, for protection. But people have managed to create out of it a dangerous symbol of people trying to invade. Just like today, sadly, Rishi Sunak, the Prime Minister of the Yes. United Kingdom, continues to do, along with the fellow, I forget her name, Suella Braverman, along with his Home Minister, Home Secretary. Both of them have their roots in India. She from Goa, of mixed parentage, and he from Africa, and prior to that, what is today's Pakistan and partly today's India. These are the people who are talking about, especially Suella, talked about the invasion of the British Isles by the migrants who are coming by boats from France to the UK. Now, to raise a bogey like that, to create an enemy so that people don't anymore look at
the $30 billion loss created just by Liz Truss and her wacky economic, um, it's more harm done Yes. than the war between Russia and Ukraine for the UK. This is what they did. And they have to find someone who's damaged hardly anything, who have come for help, and they have built on it. Now, talking money, as I mentioned 30 billion, I want to remind ourselves that the maximum number of migrants from India going somewhere outside India, international migrants, are to the Gulf countries of the Middle East. Yes. It's not to the US. No. It's not to Canada. It's to these countries. Now, of course, international migration is what created Bangladesh. The refugees of Bangladesh came into India in their 20 million or so. It's a problem we are still facing because many people who came in it's a problem they are facing too, are undocumented, and they are the ones that the government is thinking after this, I think after stripping them away out of their citizenship, 2 million of them are sought to be interned in large scale camps, which are really prisons. Now, that's what the sad thing about migration is Bangladesh to India, East Pakistan to India. But the ones in the Middle East, the ones in the US, they sent to India as remittances. Yes. Something like, I think in this year, 2022, the target of 100 billion US dollars. That's a lot of moolah. That's a lot of moolah. And that's a lot. And you know what? Most of it comes from the relatively poor people, not the IT chaps and the big earners and the doctors and the engineers, so on. It's the people toiling away in Kuwait, in Dubai, until recently in Syria, in Libya, Saudi Arabia, of course. Now, it's from there that the money is coming. And you know what? If the migrants are sending as repatriation amount, that's what kept Kerala doing very well. Now, if that's 100 billion US dollars, you know, that's a lot more than the foreign direct investment coming into India from the big companies. That's about 84 billion US dollars, I think. And that money can leave the country at the snap of a finger. That's right. At the drop of the stock market, at the beginning of any political problem. Turmoil, in the country. Because sovereign duties of the country mean that if they want to take back their money, they have to be allowed. But for Indians or people of Indian origin who send money to India, because there is no capital account convertibility, this money remains in the houses built and the cars bought and the buildings there and the lands improved and purchased, the hospitals built. So what migrants do is extraordinary. Excellent. But the government does not prepare them for life abroad. So that is why people who live very horrible lives in Dubai, in Kuwait, in Qatar, do not even have a person to go to when they are in trouble. The smart ones tweet to the foreign minister, and the foreign minister, as a public relations exercise, says, I've taken care of this person. Yeah. We are talking how many people of Indian origin live outside India. It's 32 million people of Indian origin, 3.2 crores of them. Yep. Of them, people holding the Indian passport, which means their loyalty is still to motherland, technically, legally, politically, without a voting right, living outside the country. They are 1.3 crores. Now, the ones
with an Indian passport. If you don't consider the passport, we are talking 3.2 crores. So 1% of India lives abroad without the right protection. There are the occasional things being done, but how many times have you heard that the consulate, the High Commission, has helped people who are in some need? Very rarely. So, Khobraga Day is just an exception? No, this is how most diplomats have been behaving. Privileged lives, dollar salaries, servants from India, people that you can mistreat and nobody will complain, domestic help that you import from somewhere else and not being accountable. We must change this yep. in the interest of humanity and for the dignity of the country of our origin. We must say this can't be done and we will stop you from doing it. Excellent. Babu, it's been another great conversation, and we've discussed this at length, and we've looked at different aspects. But on the whole, I think the idea of migration is important for the growth of human society, for the growth and betterment of human beings. And I enjoyed coming to Australia and changing and learning so much. And I think that should be our goal when you migrate. Of course, the economic advantage and all that, of course, we take that for granted. But in terms of spiritual and mental growth, I think that's what our aim should be when we migrate. And thank you very much. If it wasn't for migration, I wouldn't have been able to meet you here, right? And thank you, Babu. I'm not a migrant. I'm not a migrant. I'm more an itinerant. Itinerant. I have Okay, been in various countries, moving from. I am like the Banjara. I pack my bags, go to a different country, stay there a few years, and move on. But Australia So you are a seems to fakir beckon. with your jhola. You can take your But jhola anytime. Australia seems to beckon. I am fascinated by Australia. The first time I came here was in 2000. I didn't quite like the country then. It's beautiful. I came back for a lecture tour in 2018, and I was fascinated It's fantastic. by the multicultural society I looked at. Right. After all, 1/3 of Australia today is migrant. Yes. All right. This is a fantastic place. I'm sorry, I'll have to end this here because we are running out of Zoom time. But yeah, this is fascinating, and I'm sure we'll have some more conversations in future. Thank you, Babu, for your time, and thank you for all that information that you've given us. Happy Migrants Day on the 18th of December 2022, and you look after yourself. Okay, thank you. So that was Babu Gogineni, and Babu is a social worker. He wears many hats, and one of the hats is that he's a friend of this show, and he comes in and gives us a lot of good information. Take care, dosto, and we'll probably speak to Babu sometime soon in the future. प्यार तेरे ने मैनू बड़ा सताया वे ताने आने तेरे बड़ा रुवाया वे प्यार तेरे ने मैनू बड़ा सताया वे ताने आने तेरे बड़ा रुवाया वे तू जान तू मैनू प्यारा वे तू यो मेरा सहारा सजना हाँ मैं मन जाते जे दिल मेरे तो जावे ता मैं मन जाते
दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं कहते सुनते। मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और इस कार्यक्रम का नाम है कहते सुनते, जैसे मैंने कहा। और ये थर्सडे नाइट्स को 8 से लेकर 10 बजे तक सिडनी टाइम पर हम लोग आते हैं, एंड 89.3 FM 2GLF की फ्रीक्वेंसी पर, 89.3 FM, एंड यू कैन लिसन टू दिस शो लाइव ऑन 89.3। अगर आप सिडनी में हैं, आप रेडियो को ट्यून करें 89.3, तो यू कैन लिसन टू द शो। या अगर आपको नहीं सुन पा रहे हैं तो आप कम्युनिटी ब्रॉडकास्टिंग की ऐप है फ्री, उसके ऊपर यू कैन लिसन टू ऑल द रेडियो स्टेशंस, कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस इन ऑस्ट्रेलिया। हम लोग फेसबुक पर लाइव हैं ऑन कहते सुनते रेडियोज़ीन के पेज पर, और हम लोग यूट्यूब पर भी लाइव हैं। सो जहाँ पर भी जाएं तो आप यू कैन लिसन टू दिस शो। आई वांटेड टू टॉक अबाउट, या मैंने सीरीज़ देखी पिछले हफ्ते में। देयर वर 8 एपिसोड्स, एंड 8 एपिसोड्स वर अबाउट, ये सीरियल का नाम है कैट, CAT। एंड जिनको पता नहीं है कैट के बारे में, तो जब पंजाब में टेररिज्म हो रहा था ना 80s एंड 90s में, सो व्हाट द पुलिस वुड डू, दे वुड टेक ऑन दीज यंग सिख बॉयज, ओके, एंड उनको दे वुड गेट देम टू इन्फिल्ट्रेट द टेररिस्ट ग्रुप्स, और दे वुड पिक अप दीज टेररिस्ट्स, arrest them and say, okay, तुम हमारे लिए भी काम करोगे. So they would act as double agents. And obviously, जब इतना, it's a very dangerous thing जो ये जवान लड़के करते थे, मजबूरी में या शौक से. तो ये उस कैट की कहानी है. And it's a great series on Netflix, जिसमें रणदीप हुडा, I had not heard of him before this, but he's acted as the main character, Gurnaam Singh, and it's very graphic, or it's a very multi-layered story. It's quite complex. It's very interesting. Lekin how that cat becomes a cat for fighting against the drug trade that is happening in Punjab at the moment. And उसके अंदर बहुत सारे सच आपको दिखेंगे. So I enjoyed Cat. अगर आपको देखना हो तो Netflix पे it's available. It's quite engaging. But जैसे मैंने उस दिन कहा आपको थोड़ी देर पहले कि उस दिन मैं अपने दोस्त के साथ डिनर पे गया था और हम लोग छत पे, वो रेस्टोरेंट था, वहाँ पे खाना खा रहे थे. And after dinner we stood on the edge of the wall there. Not खड़े नहीं थे. And we were looking down. तो उस दिन मुझे कुछ ख्याल आया. So I want to talk about that. Why looking out of the window is a good thing. ढंग की बात. आज 15 दिसंबर 2022 है. Recently I had the almost forgotten experience of looking over a street from a high building when I went to get dinner with a friend of mine. We just stood over the building's edge and looked and watched the happenings on the street. We did not speak during that time and just took in the landscape that was before us. People walking, stopping, talking to each other, cars driving off, stopping at the lights, pausing for pedestrians. The sound of laughter, someone yelling, lights in the distance, and a misty distant scenario far away. I had almost forgotten the fine art of just looking at the active scenes that were unfolding in front of my eyes, ears, skin, and nose. All my senses were engaged, and that's when I felt alive. What a strange thing. We have forgotten the fine art of observing except watching our phones, Netflix, or some other mindless medium. We have forgotten to engage with the world around us except through the phone. We go on holidays but continue to look at our phones. But listening to the lines in a famous poem written by William Davies almost 100 years ago in 1911 brought me to understand that as humans, we have always been too busy for our own good. So I'll read out that poem. It's called Leisure by William Henry Davies. What is this life if full of care? We have no time to stand and stare. No time to stand beneath the boughs and stare as long as sheep or cows. No time to see when woods we pass, where squirrels hide their nuts in grass. No time to see in broad daylight streams full of stars like skies at night.
No time to turn at beauty's glance and watch her feet how they can dance. No time to wait till her mouth can enrich that smile her eyes began. A poor life, this if, full of care, we have no time to stand and stare. So this, I'm sure you would have heard this poem a number of times. You would have seen this on social media and all that. But I think it captures in 1911 maybe we were as busy as we are today. Now, what could be the benefits of looking out of the window or even just standing and staring? Sometimes I do it at work. I'll go to the window and just look out. But I can't do that for a very long time. I do that for a couple of minutes before you realize कि भाई लोग my colleagues are watching कि कर क्या रहा है. So in an article in Psychology Today by Sally Augustine, she says staring out of the window at the gardens and other landscaping that you can see through your homes or your office's windows can help you a lot. Cognitive scientists have learned a lot about the sorts of views that make us happy and healthy wherever we are and high performers at work. If you don't have a view of greenery outside, she suggests adding a few potted plants on your windowsill will help. If you don't have grand views from your window, pull back your curtains and let whatever natural light comes your way inside. Daylight is a sort of magical tonic for humans. Being in daylight is great for our mood, the performance of our minds, and our physical health. Kerry Law says in an article in metro.uk that if ever you find yourself staring out of the window at work, then feeling bad for not being productive, you shouldn't feel guilty. Now, this is what I feel. This habit is no time waster, but actually one of the simplest ways to boost your mind, making you better at work and better in life. If someone is staring out of the window, we might think of them as lazy, inattentive, or generally shirking responsibility. But here's what your boss needs to know. The act of letting your mind wander, to daydream, and gaze out beyond the confines of your desk can actually help you generate ideas, solve problems, and reduce work stress. This act of apparently doing nothing can make you an all-round better person. Our productivity-obsessed society doesn't value the act of doing nothing, but philosophers have been thinking about its purpose for centuries. Plato suggested the ideas inside our heads are like birds fluttering around an aviary. We need moments of purpose-free calm to allow the birds to settle and therefore our ideas to come to the fore. When you stare out of the window, it's not to look at what's going on outside, but to explore what's going on inside your head. The philosopher Zhuangzi called staring into space mind fasting. Author Marissa Peer says daydreaming, zoning out, or gazing into the middle distance can be really good for a person as it allows us to escape from our crowded minds. It creates space for us to find answers, giving us a deeper insight into ourselves and permission to be purpose-free. Marissa says we often feel guilty for staring out of the window, perhaps remembering when we were told off at school, yet inventors and geniuses such as Einstein have credited daydreaming as the route to their eureka moments. She adds, the Japanese even have a word especially for the art of gazing. It's called boketo, B-O-K-E-T-T-O. Think of it as a mini meditation. It appears we probably do this more than we think. Researchers at the University of Dartmouth found that we spend between 30 to 50% of our waking hours daydreaming. That may sound like a lot of wasted time, but a study into the concept of mind wandering by the University of York and University of California found that 40% of creative ideas occurred when participants were engaged in activities that allowed their minds to wander. There is mounting evidence to suggest that productivity, efficiency, creativity, and innovation have risen during a long period of working from home, he says. If you can accept that gazing out of the window can be an important part of giving your brain a break, then really it should be encouraged guilt-free. If your working day is proving to be a fraught one, your office window can also be a gateway to a more relaxed state of mind. By simply gazing at the sky, you can tap into the latest mindfulness technique. इसके लिए एक आइडिया दिया है किसी ने, स्काइकोलॉजी.
The study of how looking up at the sky impacts our well-being was devised by coaching psychologist Paul Conway. His research found that even in short bursts, purposefully staring at the sky can have an instantly positive effect on our mental state. It's like a reset button on your day, Paul says. It's not going to make that challenging meeting go away, but it's an opportunity to just breathe. It's immediately calming and appears to be a very effective form of emotional self-regulation. His study found that focused sky gazing coupled with deep breathing also promotes a greater sense of connectedness, allowing us to see ourselves as part of the bigger picture. This helps us view problems from a new angle and gives us the mental space to innovate. The sky is a big space, so you get a sense of perspective and a feeling of being a part of something bigger than oneself, he says. That was my Dhangg ki baat. So stare out of your window, look at the sky, look at greenery, look at what's happening, take a deep breath, and it'll make you more productive. Drift off. You don't have to be focused on the task. The moment you let your mind wander, you will notice that you become more productive. That was Dhangg ki baat. I hope you liked it. Do let me know what you thought. This is Kehte Sunte. मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली. मनमोहन कहना विनती करूं दिन राह तके मेरे मनमोहन कहना विनती करूं दोस्तों अभी मेरे साथ जुड़े हैं साउथ एशिया टाइम्स मेलबर्न से नीरज नंदा जी. एंड सबसे पहले नीरज जी, माफ़ी चाहता हूँ, बहुत लेट हो गए, लेकिन वो बाबू के साथ इतनी अच्छी डिस्कशन हो रही थी, मेरा दिल नहीं कर रहा था रुकने का. सो माफ़ी चाहता हूँ. आई एम सॉरी कि हम लोग इतना लेट शुरू कर रहे हैं. नहीं, नमस्कार मनबीर जी. मैं भी उनकी टॉक को बहुत सीरियसली सुन रहा था. थैंक यू. और एक ही चीज उसमें अगर आप हुक्म करें तो मैं जोड़ दूं. प्लीज. वो सिर्फ मेरा पर्सनल है कि आई एम ए रिलक्टेंट माइग्रेंट. मैं आने को तैयार नहीं था यहाँ पे. ओके. बट अब मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे. तो एक थोड़े से लोग ऐसे भी होते हैं, उनकी कैटेगरी इस टाइप की भी होती है, मतलब. ठीक है. एनीवे, तो आज अब न्यूज ब्रेक से करते हैं. जो थोड़ी देर पहले ही उस समय जब मैंने लिखा था तो न्यूज ब्रेक था कि ऑस्ट्रेलिया की सेनेट में आज लेबर सरकार, जो एंटनी एल्बनीज की सरकार है जी, ने ग्रीन्स और कुछ इंडिपेंडेंट्स के सपोर्ट से कोयला और गैस, कोल एंड गैस की जो प्राइसेस पर 1 ईयर का प्राइस कैप लगाने का कानून पास कर दिया. वेल डन. तो मैं समझता हूँ ये बहुत हिस्टोरिकल चीज है. बिल्कुल. इस ऐतिहासिक लॉ से 1 साल तक गैस की कीमतें $12 पर गीगा जोल, ये गैस को उसको मापने का ढंग वो है जी, होंगी. और ऑस्ट्रेलियंस को गैस इंटरनेशनल प्राइस पर नहीं बेची जाएगी. ये इसका मुख्य पॉइंट है. ठीक है. कि जिनकी की कीमतें रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसके कारण चरम सीमा पर है. मतलब कि उनकी वजह से प्राइसेस से जो यहाँ के लोकल प्रोड्यूसर्स हैं वो उसको हमारे को लूट लूट के फायदा उठा रहे थे. जबकि ऑस्ट्रेलिया में ही गैस पैदा हो रही है और वो ही हमें इंटरनेशनल प्राइस पे बेच रहे थे. तो उसके ऊपर सरकार ने लगाम लगाई है आज. वेल डन. सेनेट में लिबरल पार्टी और नेशनल पार्टीज ने एज एक्सपेक्टेड ने जनता को इस कंसेशन देने का जमकर विरोध किया. और एक मेंबर वन नेशन के थे, उन्होंने भी इसका विरोध किया.
और आपको ये बताना चाहूंगा कि मैंने काफी घंटों तक जो लाइव डिबेट थी पार्लियामेंट की, वो मैंने पार्लियामेंट की वेबसाइट पर देखी, मतलब वेल डन। उसमें से आपको मैंने बनाया ये। जबकि लेबर पार्टी और ग्रीन्स ने जमकर इस मूव को का समर्थन किया। खास तौर पे ग्रीन्स की एक सेनेटर थी, उन्होंने बहुत जबरदस्त डिफेंस करी और ये कहा कि हम आम जनता को हेल्प करना चाहते हैं। गुड। इस कानून को 28 वोट का समर्थन प्राप्त हुआ और 22 लोगों ने इसका विरोध किया, और ये कानून फिर पास हो गया। तो ये इसके चलते, इसमें एक पॉइंट और है जो मैंने पॉइंट में लिखा नहीं था, वो ये है कि ग्रीन्स ने कुछ शर्तों पे लेबर पार्टी को सपोर्ट दिया इसमें कि नेक्स्ट ईयर जो कॉमन पीपल हैं उनके बिल्स में डिस्काउंट्स वगैरह दिए जाएंगे, ओके। जिसके डिटेल काफी हद तक वेरी सून हमें अवेलेबल हो जाएंगे। अब चले भारत, जहां हमेशा ही खबरों के बादल छाए रहते हैं बौछार रहते। और वहां ड्रिजल तो हर समय होता ही रहता है, लेकिन कई दफा बौछार भी जोरों में होती है। इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, जो कि जेएनयू की एजुकेटेड है, ने सीपीआई के एक एमपी के क्वेश्चन के आंसर में बताया कि बैंकों ने पिछले 5 वर्ष में 109,511 करोड़ रुपया वाओ। जो कर्जों में फंसा हुआ था, बड़ी बड़ी कंपनियों ने लिया होता, उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के कैटेगरी में डाल दिया। वेल डन। इसके चलते ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, जो इंडिया में बैंक एम्प्लॉयज की सबसे बड़ी यूनियन है, जी। ने अपने न्यूज़लेटर में मांग की है कि सरकार हर 6 महीने में सारे जो डिफॉल्टर्स हैं, जो जो बैंकों से उधार ले, इन बैंकों में मनबीर जी प्राइवेट बैंक भी हैं और सरकारी बैंक, दोनों बैंक बिल्कुल। हैं। हाँ। तो डिफॉल्टर जानबूझकर उधार की रकम वापस नहीं करते, उनकी लिस्ट जाए एवरी 6 मंथ्स में। एआईबीए के अनुसार ये लोग आम पब्लिक की सेविंग्स को लूट रहे हैं और इसको बंद किया जाए। अब आगे चलते हैं। उधर भारत ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसको शॉर्ट में हम कहते हैं ओआईसी, जी। के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा की पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको हम पीओके कहते हैं, जी। की कड़ी निंदा की है भारत ने। भारत ने कहा कि ओआईसी जनरल ने जो कुछ वहां कहा वह इंटरफेरेंस एंड मेडलिंग इन इंडियाज अफेयर्स है और अनएक्सेप्टेबल है। उन्होंने कुछ कुछ वहां पे कहा। गुड। भारत ने कहा है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पीओके भारत का इंटीग्रल एंड इनएलिनिएबल पार्ट है और ओआईसी को इस क्षेत्र पर कोई लोकल स्टैंडिंग नहीं है। मतलब उन्होंने उनके जो विचार थे उनको क्रिटिसाइज किया भारत ने। ठीक है। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियन ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अपनी लेटेस्ट नेशनल एंटी रेसिज्म फ्रेमवर्क की 176 पेजेस की रिपोर्ट में जी। पहली बार कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को भी शामिल किया है। दैट इज सो गुड। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को शामिल किया है। और ये कैसे हुआ? द ह्यूमनिज्म प्रोजेक्ट, जिसका शॉर्ट में नाम है, टीएचपी द्वारा कास्ट पर जो सबमिशन किया गया था उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया और रिपोर्ट ने कहा कि केस को रिपोर्ट में डालने से अब ऑस्ट्रेलिया के जितने भी संगठन हैं वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बुराई को कोई किसी भी पॉलिसी को बनाते समय नजरअंदाज नहीं कर सकते। मतलब कोई भी एंटी रेसिज्म पॉलिसी बनेगी तो उसमें इसको भी कंसीडर किया जाएगा। दिस इज हिस्टोरिक, फैंटास्टिक। हाँ, दिस इज हिस्टोरिक। पूरी रिपोर्ट आप साउथ एशिया टाइम्स की वेबसाइट में जो इस टॉपिक पे न्यूज है उसमें इसका लिंक है और आप पूरी की पूरी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। वाओ। नॉट जस्ट ऑन कास्ट, ऑन एवरीथिंग। नाइस। जब 9 दिसंबर को नेशनल प्रेस क्लब ऑफ ऑस्ट्रेलिया में एक प्रेजेंटेशन में जो ऑस्ट्रेलिया की होम मिनिस्टर ने क्लेयर ओ'नील ने कहा कि एल्बनीज गवर्नमेंट जो है वो देश पर किसी भी प्रकार के खतरे या सिचुएशन को फेस करने में सक्षम है। वी कैन मीट एनी चैलेंज, इंटरनल चैलेंज इन ऑस्ट्रेलिया। मिनिस्टर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने 2-3 पॉइंट्स बताए और उनकी जो स्पीच थी जो मैंने पूरी सुनी। क्लाइमेट, टेक्नोलॉजी और इमिग्रेशन, ये 3 मतलब इंटरनल प्रॉब्लम इश्यूज हैं ऑस्ट्रेलिया के
जिनको की बात करना बहुत जरूरी है। उनका ये कहना था कि मामलों में डोमेस्टिक सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन में इंपॉर्टेंट मानती हैं और इन तीनों पॉइंट पर जमकर काम हो रहा है और जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसमें पॉलिसी फ्रेमवर्क बना रहे हैं। एक उन्होंने और ये कहा कि सरकार एक स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी टास्क फोर्स भी बना रही है, मतलब अच्छा। डेमोक्रेसी को, मतलब की जो लिबरल डेमोक्रेसी है ऑस्ट्रेलिया की, उसको फर्दर कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। वहां पे एक पत्रकार जो द ऑस्ट्रेलियन अखबार के थे, ये मैंने लिखा नहीं है बट मैं बोल देता हूँ जल्दी से, हाँ बिल्कुल। ने ये कहा कि भारत सरकार ने कुछ लोगों द्वारा खालिस्तान का इशू उठाने को लेकर ऑस्ट्रेलिया से कुछ कहा है, तो आप उसके बारे में कुछ बताएं। तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास सारे चीजें मौजूद हैं सरकार के पास, जिससे वो किसी भी खतरे को, अगर कुछ इंडिविजुअल्स की तरफ से आ रहा है, उसको वो डील कर सकती है। बिल्कुल। इसलिए ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि मैं एक पूरी कम्युनिटी को इसके ऊपर टारगेट कर उसके टारगेट करूं। तो ये उन्होंने आपने कहा। तो एक दो दिन के बाद मैं एक फंक्शन में गया और वो वहां पे मेरे को मिल गई, मतलब अच्छा। होम क्लेयर मिनिस्टर थी, ओनियल। और मैंने उनको उनकी स्पीच के लिए उनको बहुत बधाई दी और ये कहा कि मैं इस बात को कहते सुनते रेडियो स्टेशन और साउथ एशिया टाइम्स न्यूज पोर्टल पे बोलूंगा इस बात को मैं। फैंटास्टिक। व्हाट अ इसलिए मैं ग्रेट उनका नाम, थिंग। हाँ उन्होंने ये कहा कि हम किसी, मैं वो साउथ ईस्टर्न मेल जो सबर्ब्स है मेलबर्न के, उसकी रिप्रेजेंटेटिव है फेडरल पार्लियामेंट में, कि मेरी कम्युनिटी बहुत मल्टीकल्चरल है और बहुत मैच्योर है, मतलब हमारी मेरी कम्युनिटी। ग्रेट। और अगर कुछ इंडिविजुअल्स गलत काम करते हैं जो हमें लगते हैं, तो उसके लिए हम पूरी कम्युनिटी को पे दबाव नहीं डाल सकते। वेल ये डन। उनका मतलब है। वेल डन। अब उधर भारत में चलते हैं फिर। ये ना वैसे ये चलता ही रहता है, भारत ऑस्ट्रेलिया भारत ऑस्ट्रेलिया। बिहार के से आई समाचारों के अनुसार ये एक फ्यूचर की बात है। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने कहा है कि 2025 के जो असेंबली चुनाव होंगे बिहार में, उसमें जो महागठबंधन है आरजेडी, जेडीयू, लेफ्टिस्ट पार्टीज और कांग्रेस वगैरह और छोटी पार्टियों का चुनाव आरजेडी के जो अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर है तेजेश्वरी यादव, उनकी लीडरशिप में होगा, मतलब। ओके। तो ओके। बेसिकली इसका अर्थ ये हुआ कि अगर 2025 के बिहार के स्टेट इलेक्शंस में महागठबंधन जीतता है अगर, तो बिहार के अगले चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव होंगे। ये मतलब है। परंतु किस्सा क्या सारा ही असल में कुर्सी का है। ऐसा हाँ, एक किस्सा कुर्सी का है, परंतु क्या असल में ऐसा होगा वे तो 2025 में ही पता चलेगा मनबीर। अभी हम नहीं कह सकते, हम ठीक है। सिर्फ खबर। अब चलिए वो इशू जिसकी हम लोग जिक्र कर रहे थे यहाँ पर, मैं उधर अरुणाचल प्रदेश में भारतीय और भारत और चीन के बीच झड़प को लेकर संसद में मतलब भारत की जो पार्लियामेंट है उसमें विपक्ष ने हंगामा किया और देश को विश्वास में लेने की जरूरत पर की बात कही। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो है वो पूरे देश को विश्वास में ले इस इशू के ऊपर, क्योंकि ऐसी कुछ खबरें आ रही थी कि सब कुछ क्लैरिटी नहीं है इस इशू के ऊपर। और दिसंबर को की इस क्लैश में दोनों कंट्रीज के सैनिकों में की इस झड़प में दोनों साइड्स के जो जवान है वो मामूली रूप से घायल हुए, ऐसा खबरों का कहना है। खासतौर पे wire.in में मैंने ये खबर पढ़ी है। इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उनका कहना है कि भारतीय सैनिकों ने चीनी अतिक्रमण, काफी बुरी हिंदी है थोड़ी, मतलब चाइना का जो एग्रेशन है, कि जो अतिक्रमण का जो प्रयास है उसको दृढ़ता से उसका जवाब दिया। ये उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि भाई हमारे सैनिकों ने वर एबल टू ओवरकम द डिफिकल्ट सिचुएशन, जो कि चाइनीज हमारी टेरिटरी में इंट्रूड कर रहे थे। और ये मैं देख रहा था वीडियोस, आई डोंट नो वो सही है कि नहीं, लेकिन वो फिजिकल कॉम्बैट हो रहा है, वहां से उनको हाँ, धक्के मार इसमें के निकाल हथियारों दिया। का कुछ नहीं हुआ, हथियारों का यूज नहीं है। और एक डिफेंस एनालिस्ट का कहना है दिस इज अ गुड थिंग कि अब हथियारों का यूज होता ही नहीं वहां पे। मतलब वो हाथापाई और पत्थर और डांग से उसको भगा रहे, लकड़ी मार के भगा रहे लोगों को, चाइनीज सोल्जर्स को। वो एक मनबीर जी, एक पुरानी कहावत है कि इन एवरी वॉर और मे बी इस टाइप की सिचुएशन में ट्रुथ इज द फर्स्ट कैजुअलिटी। करेक्ट। तो दैट्स करेक्ट। किसी को अब जो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, हम तो वही बात कहेंगे ना, मतलब जो पार्लियामेंट में उन्होंने कहा है। हाँ, तो हालांकि 9th को, अलग अलग अखबारों में अलग अलग खबरें छप रही हैं इसको, इस इशू पे ऊपर। लेकिन
जो गवर्नमेंट ने भी टाइम लिया, दे डिडंट टॉक अबाउट इट, 3-4 दिन निकल गए उसके बाद में बताया, तो ये क्या वजह थी? हो सकता है शायद ऐसा, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, मैं दिल्ली में तो बैठा ही नहीं हुआ सेंटर ऑफ पावर में, बट हो सकता है उनको टाइम लगता है कई दफा। ये ऐसा भी होता है कि कई दफा समय लगता है खबर मिलने में। हालांकि आजकल तो कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है, तो खबर इंस्टेंटली आ जानी चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल। और इवन चाइना का भी ऐसा ही रुख रहता है कि वो पूरी तरह बताते नहीं है पूरी बात वो को। तो चलो वी नो दैट, लेकिन हाँ ये जो एट द सेम टाइम चाइना के साथ इंडिया का ट्रेड बहुत बढ़ रहा है, बढ़ता इट्स ही जा गैलपिंग। रहा है और नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का। और सो अब ये देखना है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है उसका क्या असर होता है उसके ऊपर, ये आने वाला समय बताएगा। मतलब हाँ, तो पाकिस्तान से तो हम लोग अपना ट्रेड वगैरह सब छोड़ देते हैं, वहाँ से थोड़ा भी कुछ करना पड़े तो, बट चाइना के अगेंस्ट इनफैक्ट इंडिया हैज़ अ डेफिसिट ऑफ ट्रेड, तो वहाँ से जी इंपोर्ट तो ज़्यादा होती है, एक्सपोर्ट कम और होती वो है। और वो और मनबीर जी वो बढ़ता ही जा रहा है। मतलब बिल्कुल। और एक इवन तरफ ऑस्ट्रेलिया का भी टेंशन है चाइना के साथ, उनका भी नंबर 1 पार्टनर चाइना ही है। और एक तरफ इंडिया छोटी मोटी टिकटॉक ये वो बैन कर दे के शोर मचा देते हैं, है ना, बट जस्ट अ हाँ गिमिक। बट जो असली है कि जहाँ पे ट्रेड डेफिसिट है, एंड दैट टेल्स यू कि सबसे बड़ा रुपया है, जी कि भाई कंट्रीज ट्रेड, एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर ट्रेड नहीं है, जो हाँ, क्षमा करे मनबीर जी, जो सरमाए के ठेकेदार हैं जिनके हाथ में सरमाया है सारा, जिनके हाथ में कैपिटल है, यस, वो अपना प्रॉफिट थोड़ी छोड़ देंगे किसी बिल्कुल, चाइना और हाँ इंडिया के लिए। हाँ, जस्ट तो बिकॉज ऑफ, अगर मे बी हो सकता है हमारे सुनने वालों को आइडिया है या नहीं, लॉट ऑफ इंडियन कंपनीज आर वर्किंग इन चाइना। या या ऐसा नहीं है कि इंडियन कंपनियां, और बहुत इंडियन लोग काम करते हैं चाइना में। मतलब या तो चलिए आगे चलता हूं मैं। थोड़ी हम अपनी ट्राइब पे आ जाते हैं, पत्रकारों के ऊपर। हाँ, कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, ये एक इंटरनेशनल बॉडी है, मैं भी इससे कनेक्टेड हूँ इन द सेंस कि मैं उनकी न्यूज वगैरह पढ़ता रहता हूँ। इन दैट सेंस के यप, अनुसार सारी दुनिया में दिसंबर 1 2022 तक, मतलब आज से 14 दिन पहले तक 363 जर्नलिस्ट जो हैं वो अलग 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 कंट्रीज की जेलों में अरेस्टेड हैं। उनको उनके काम के लिए उनको नजरबंद किया हुआ है सरकारों ने। यप, भारत में सीपेजी के अनुसार 7 पत्रकार जेल में हैं। तो वो उतनी बड़ी मतलब वो नहीं है। हाँ, विश्व की में सबसे अधिक पत्रकार ईरान, चाइना, म्यांमार यानी जिसका पहले नाम था बर्मा, और टर्की और बेलारूस में जेलों में है। मतलब पत्रकार जो जो मीडिया का काम करते हैं आपके और मेरी तरह, सबसे अधिक पत्रकार जिस कंट्री में है, मनबीर जी आप सोच सकते हैं वो कौन सी है, मतलब जेल में जो है, मतलब आप नहीं, अंदाजा लगा सकते हैं। अमेरिका ईरान मत में, बोलना। ईरान ईरान, में ऑफ कोर्स, जी हाँ, ऑफ जहाँ कोर्स, पे कि इतना तगड़ा आंदोलन चल रहा है और वहां लोगों की एग्जीक्यूशन भी शुरू हो गई है। बिल्कुल। और अंत में हमेशा की थोड़ा सा लाइट है, और जिन दिनों में इंडिया में टीवी में काम करता था तो अक्सर मेरी स्टोरी एंड में ही आती थी, क्योंकि मैं काफी अक्सर फिल्म्स के ऊपर स्टोरी करता था। मतलब एंड आई एंड ऑलवेज लिसन टू योर, जो फिल्म के बारे में आप बताते हैं प्राइवेट हमारी कॉन्वर्सेशंस में भी, तो भी मैं बड़े ध्यान से सुनता हूँ। अच्छा, अब मैंने ये फिल्म देखी है, और ये हमारा आज का आखिरी आइटम है। हमारे सुनने वाले भी दुखी हो गए होंगे सुन सुन के खबरें। Z5 ग्लोबल पर ब्लर मूवी चर्चा में चल रही है। ब्लर का और ये हिंदी मतलब फिल्म इंग्लिश में, हिंदी फिल्म है। है। वो मैं हमेशा ही सोचता हूँ कि हिंदी फिल्म का नाम इंग्लिश में क्यों है। ये मैंने अभी अभी मेरे दिमाग में आई है ये बात। मतलब ठीक है। ब्लर का मतलब है कोई चीज धुंधली हो जाए, अगर वो हाँ जी, नजर से दिखाई नहीं दे प्रॉपरली। हाँ जी। तो तापसी पन्नू इस फिल्म की प्रोड्यूसर है, और उन मिल फिल्म में वो खुद इसकी मुख्य भूमिका भूमिका निभा रही है। मतलब ओह वाह। और इस भूमिका में वो नैनीताल जाती हैं और अपनी उनकी बहन का वहां पे मर्डर हो जाता है और उसके कातिल को हंट करती हैं वो। मतलब शी इज ट्राइंग टू फाइंड आउट द किलर ऑफ हर सिस्टर। ओके, और थ्रिलर है। आई थिंक सिस्टर का भी थोड़ा सा रोल दिखाया, वो भी खुद ही उन्होंने किया है उसको। अच्छा। परंतु अपनी बहन की तरह अच्छा, उनकी जो सिस्टर है जिनका जिनका कत्ल हुआ है, मतलब वो
उनकी भी आंखों की प्रॉब्लम है, उनको भी मतलब उनकी भी आई साइट जा रही थी, तो उनका ऑपरेशन वगैरह होता है, और काफी किस्सा है स्टोरी में। परंतु ओके। अपनी बहन की तरह उनकी अपनी आई साइट भी कम हो रही है, जहां हाँ, वो किलर को ढूंढ रही हैं। इसलिए तो ब्लर। हाँ, ये एक काफी वर्षों पहले कोरियन फिल्म, एक और फिल्म आई थी, उसके ऊपर बेस्ड है मतलब। ओके, वाओ। एंड तापसी जैसे पन्नू जैसे वो, इज अ ग्रेट हाँ जी, एक्टर, आई एम अ बिग फैन। शी इज डन वेरी वेल इन दिस मूवी। जैसे जैसे वो कातिल के करीब पहुंच रही हैं, उनकी आंखों की नजर कम हो रही है। ये एक मतलब थीम है फिल्म का। ये फिल्म में काफी सस्पेंस है, और ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है मतलब वाह। काफी। और पन्नू का खुद आईज का ऑपरेशन फिर बाद में होता है, और सेकंड हाफ में वो ब्लाइंड फाउंडेड है, मतलब उनकी आंखों पे एक पट्टी बंधी हुई है, और उसमें चलती है। तो डायरेक्टर अजय बैल द्वारा जो डायरेक्टेड इस फिल्म में, अ, काफी जो है मतलब डार्किश मूवी है ये, और इसमें खून खराबा काफी है मतलब ओके। बाद में इसमें होता है। और मैं आपको एग्जैक्ट स्टोरी जानबूझ के नहीं बता रहा मैं, हाँ, स्पॉइलर। क्षमा करें। तो तब से ही पन्नू ने साउथ एशिया टाइम्स और कहते सुनते को एक इंटरव्यू में बताया, क्षमा करें, अब कि अगर हर समय पट्टी पहननी पड़े, मतलब उन्होंने पट्टी पहन के शूटिंग जो की थी उसके बारे में वो बता रही थी, तो शरीर के जो दूसरी इंद्रियां हैं वो तेज हो जाती हैं, मतलब जहां आंखें बंद हो जाती कॉम्पनसेट हैं। करते हैं, हाँ। हाँ, तो उन्होंने, तो ये इंटरव्यू अगर आपको देखना है तो आप साउथ एशिया टाइम्स की वेबसाइट पे जा सकते हैं, और इस इंटरव्यू को देख सकते हैं। एक इंटरव्यू और हमारे पास हो रेडी है, जिसको मैंने अभी अपलोड करना है। वो है प्रतीक बब्बर का, जो अच्छा। स्मिता पाटिल के बेटे हैं, एंड ही हाँ। आल्सो प्रीटी डूइंग वेरी वेल। ओके। उनकी फीचर फिल्म आई थी इंडिया लॉकडाउन, उसका भी रिव्यू है हमारी वेबसाइट पे, तो वो भी आप देख सकते हैं वेरी सून। तो मैं समझता हूँ कि यही फिल्म मैंने बोला था कि मैंने देखी है, जब आपने क्वेश्चन पूछा हाँ, वेबसाइट के ऊपर। और ब्लर। तो एंड ब्लर, आपकी वेबसाइट पे आप बता रहे हैं साउथ एशिया टाइम्स का जो पोर्टल है southasiatimes.com.au, वहाँ पे तापसी पन्नू का इंटरव्यू स्पेशली डन बाय साउथ एशिया टाइम्स, वन ऑन वन इंटरव्यू है, एंड दैट्स अवेलेबल देयर। एंड अभी आप प्रदीप बब्बर का भी इंटरव्यू अपलोड करेंगे, ब्लर का रिव्यू है, और बहुत सारी खबरें हैं और रिव्यूज़ वगैरह उस और पोर्टल एक पर चीज है। मैं अंत में कहना चाहूंगा कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम हर एक अपनी न्यूज आइटम में वीडियो डालें हमेशा। हम्म। तो बट ऐसा हुआ कि जो तापसी पन्नू का पहले वीडियो पे ही इंटरव्यू होना था, हाँ जी। परंतु आप जानते हैं राजीव शर्मा वो पहले न्यूज देते थे इंडिया से, जी जी जी। कहते थे में, हाँ। तो उन्होंने ही वहां से दिल्ली से किया इसको। तो ये है कि वो फिर लास्ट मोमेंट पे हो गया कि नहीं, वो ऑडियो में करेंगी, वो वीडियो पे नहीं होगा, तो हमने फिर ऑडियो पे ही कर लिया मतलब। तो भी आई मीन तापसी पन्नू को सुनने में, शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट वुमन, एंड शी बहुत इज़ अ अच्छा ग्रेट एक्टर। इंटरव्यू है, एंड शी टॉक्स वेरी वेरी कैंडिडली, एंड ओके। बड़ी एक जैसे दो जने बातचीत कर रहे हैं, वैसे राजीव ने बहुत अच्छा इंटरव्यू किया है इसमें। एक्सेलेंट, तो बहुत बहुत। मनबीर जी, आई होप कि आई डोंट ब्लर एनीबडी एल्स। एंड आज आज का प्रोग्राम यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ अपना, और मेरा सबको नमस्कार, थैंक यू बहुत वेरी बहुत मच थैंक यू। एंड और ये हमारे दोस्त हैं नीरज नंदा जी फ्रॉम southasiatimes.com.au। इनका अपना पोर्टल है, 24 आवर्स यू कैन गो एंड read up articles, watch videos, listen to audio, and of course बड़ी अच्छी बैलेंस्ड खबरें देते हैं। सो थैंक यू नीरज जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार जी। नमस्कार। तो थोड़ी सी म्यूजिक दोस्तों, एंड इसके बाद में आई विल ब्रिंग क्रिस मल्लिका भद्रा। आप लोग देख रहे सुन रहे कहते सुनते। राह तके मेरे अब तो दरस दे दो, अब तो दरस दे दो, कुंज बिहारी मनवा है बेचैन, मनवा है बेचैन। तो हमारे वी हैव बीन जॉइंड बाय सुमन माथुर, पहले गायब थी लेकिन सुमन जी, आई होप यू आर स्टिल वाचिंग, एंड बबली जी इज़ वाचिंग इंडिया में बैठकर। बबली जी कैसी हैं आप?
नाइस टू सी यू. और पंकज, अगर आप अभी भी ऑनलाइन हैं तो थैंक यू. पंकज वीर हमारे दोस्त हैं, पूना में बैठे हुए हैं. एंड मैं अभी आमंत्रित करता हूँ क्रिस मल्लिका बद्रा को, उनको मैं लेके आता हूँ. नेह की डोरी तुम संग जोरी, हमसे तो नहीं जावेगी तोड़ी. नेह की डोरी तुम संग जोड़ी, हमसे तो नहीं जावेगी तोड़ी. हे मुरलीधर कृष्ण मुरारी, तनिक नावे चैन. हे मुरलीधर कृष्ण मुरारी, तनिक नावे चैन. अब तो दरस दे दो, अब तो दरस दे दो. कुंज बिहारी बनवा है बेचैन. सो दोस्तों, आपको बता दूं कि आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कहते सुनते, और मेरे साथ मेलबर्न से, जो पिछले हफ्ते गायब थी, आज पहुंच गई हैं. एक हफ्ता लगा उनको पहुंचने के लिए. क्रिस मल्लिका बद्रा. Chris does coconut chats and she joins us from Melbourne every Thursday night. And here she is. Chris, good to see you back. थैंक यू. आज मैं टाइम से पहले मैंने ज्वाइन किया. आई वाज ओपन. तो वो क्या करता है कि मेरी जो Zoom की स्क्रीन है उसको totally throws it out of whack. So that's why I had to cut you off. So apologies for that. Apologies for last week, Manbir. I could not join in. We noticed. इसी कोई नोटिस करे या नहीं करे, मैं जरूर नोटिस करता हूँ कि आज क्रिस गायब है, तो सूना सूना लग रहा है यहाँ पर. Thank you. और आज आपके चेहरे पे लाइट भी है, so which is an improvement. धीरे धीरे हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा. हाँ, अभी आप आ भी गई हैं और जी. लाइट भी है चेहरे पे. कैमरा, और जो आपका लैपटॉप का कैमरा है वो भी नॉटी नहीं है. So things are improving. They're looking up. And I hope they Good to continue hear. to look up. Good to hear that, Manbir. हाँ, so you have a very weird subject to talk about today. जी. बताइए क्या है? I wanted to ask you and everyone who listens to Kehte Sunte is, as partners, after one point of time, do we start getting inferiority complex from each other? That's interesting. I'll tell you, हाँ. if you may, I'll tell हाँ. you a little story जहाँ से ये concept kind of Yeah, please. took birth in my mind. I was seeing someone some years ago, and he was aware that I am a dancer. I perform in Melbourne, and then ऐसे ही किसी दिन ना कहा सुनी हो गई, and then in his anger he is asking me कि तुम क्या expect करती हो कि you will go up on stage and perform, and I will sit in the audience and watch people clap for you. I can't do that. It's a slap on my ego. Wow. तो तब तो बात register हुई थी, but अभी when I think of it, then that's where this question came up from कि क्या जब हम partners होते हैं एक दूसरे की तरक्की से, do we start feeling inferior to each other? Okay. Now, इसके well, okay. I can talk from my personal perspective. Yeah. I don't face that, and my partner doesn't either. We celebrate each other's success. In fact, so I can say that from our relationship. Yeah, yeah. But what you are saying, I have heard. Okay? Yeah. एक इनफैक्ट बहुत फेमस हिंदी फिल्म भी है जो इस पर बनी थी, अभिमान. एग्जैक्टली इसी सब्जेक्ट पर कि अमिताभ बच्चन इज अ सिंगर. ही इज अ पॉपुलर सिंगर. Yeah, he's not a trained singer. Yeah. And he meets Jaya Bhadri, who's a trained singer in a village.
and he brings her, marries her, falls in love, and of course brings her to the city. And then Yes. she gets discovered. And because she has trained in music, so she starts doing well, and Amitabh's career goes for a toss. Yeah. And it was about that conflict. So, yeah, I've heard that, but I haven't seen it in fact, I see it उल्टा यार. At least public में लोग अपने partner की ऐसी पतंग उड़ाते हैं ना कि जैसे भाई मेरे वाइफ के बिना तो काम ही नहीं चलता काम पे. मेरी वाइफ तो क्या, मतलब शी इज सो क्लेवर, शी इज दिस, शी इज Yeah. दैट, एंड वाइस वर्सा कि भाई मेरा हस्बैंड के बिना वो ही इज द बेस्ट, ही इज दिस. वो सब भी मैंने सुना है. लेकिन वही है ना मनबीर, what conversations actually take place behind closed doors वी डोंट नो. are the driving forces of that relationship dynamic. मुझे लगता है जो लोग बाहर इतना बढ़ा के बोलते हैं ना, they obviously have some issues going on. क्योंकि a normal couple who complement each other in real life and they mean it, they would not go about beating their own drums in front of everyone. This is how I see things. Okay. So what you are saying is कि भाई ये husband और wife में या partners में एक competition है. Is that what you're saying? Matlab, that's my question, that does that happen? Is it real? Obviously, I'm not married, but I was asked this question at one point of time कि तुम डांस करोगी और मैं तुम्हें देखूं, I'm not going to do it. But that is when things went awry, okay? That is when you said कि भाई कुछ struggle हुई relationship में. But if the relationship is going well, did you see that happening? No, that time though the relationship had a lot of every conversation became an issue. So I was naive that time. I was a different person. मुझे था कि भाई कैसे भी करके I have to salvage this relation. अभी होता था I would not have bothered and tolerated even 1% of that bullshit that came my way. लेकिन that time I was a different person. लेकिन I realized I was asking myself this question a few days ago. कि what if वहाँ पे would have gotten married and obviously I would have continued performing. Because that's what I love doing, right? तो ये तो फिर रोज का conversation होता कि यार सब तुम्हें कह रहे हैं and I'm just sitting as one of the crowd in the audience, ये क्या blah blah blah. तो does this actually happen? क्या ये होता or is it just a figment of my imagination? Look, I can't generalize, so I can only talk about my experience. Yeah. But also there could also be some insecurity, not the insecurity कि you're doing well, better than him or not better than him, उसकी नहीं. But if you're on stage, some people can feel threatened कि भाई people are looking at my wife or my partner, my girlfriend. But it shouldn't, जैसे आपने कहा कि ma'am is very proud of your achievements, you are very proud of her achievements. Yes. Similarly, shouldn't I feel very proud that my partner is up on the stage, he's talking or he's performing? Absolutely. Why should I feel threatened? Absolutely. I mean, look, even siblings में rivalry होती है. But you will notice कि when you are on stage, you don't have a sister or a sibling, but say your parents, the way they look at you when you're on stage, it'll be absolutely supportive, so proud of you. And even if the siblings के अंदर जो rivalry होती है, I have seen कि भाई on stage they are so proud of their siblings and they will support them. So I feel the relationship defines how you will react to all that. If there is genuine love, so then there will be, I think, support. Okay, Renu says, na, usually to nahi hota. If wife is more successful than husband, tabhi hota hai. Okay, that's unusual. जो रेनू जी कह रही हैं कि भाई सिर्फ ये वाइफ्स के लिए होता है हस्बैंड्स को, कि अगर वाइफ सक्सेसफुल. Are you trying to refer to that male ego which comes into play कि मेरी वाइफ मुझसे ज्यादा कैसे कमा रही हैं या मुझसे ज्यादा फेमस कैसे? Is that male ego which drives this complex? But really ऐसा क्यों? I'd be very proud. I mean, मैं और मेरी वाइफ, we are similar in terms of earning money. कुछ ज्यादा फर्क नहीं है. But if she went and she, doubled her income, I would be really happy. And मुझे भी लगता है कि if I have to see marriage or a partnership from a very, very pure perspective, then this is the closest relationship you can have. You're sharing your whole life with that person, right? तो वहाँ पे complex
आने का सवाल कैसे? If he or she is earning more than you or socially is more active than you, why should you be jealous of it or why should you have an issue with it? I think you should be proud of it. और the other thing is, when you are entering into a partnership, आपको उससे पहले भी इस चीज का इल्म था कि this person is like that or my husband or my partner is like this. So तब जब when you didn't have an issue, why does it become an issue after you guys are sharing lives together? सुखदेव जी कह रहे हैं, जो कि रेडियो महक करते हैं संडेज को इन सिडनी, वो कहते हैं कि जजमेंटल एटीट्यूड क्रिएट्स कॉम्प्लेक्सेस in marriage or any other relation. Being judgmental causes complexes. Difference of opinions are okay, but should be addressed as such, not with one's ego. Yeah, I agree. That's very idealistic, but कई लोग इतना नहीं करते हैं. रेनू सिंगल जी कह रही हैं कि if husband wife same profession में है तो ज़्यादा chances हैं ऐसा होने का. Okay. I am not a big fan कि husband wife same जगह पर काम करें, but that is because it gets very complex. But वो अलग issue है. Renu's point reminded me of a very funny conversation, Manbir. I'll make it long story short. So we met someone through shadi.com or Bharat, whatever that was. I was still kind of in my second year of PhD. That gentleman was also in second year of his PhD. He was doing his PhD from London. So initially, हाँ हमें तुम बहुत पसंद हो, blah blah blah. I'm coming back to India to talk to my mother about you. I really want to move ahead, and he also told me I will come to Delhi to visit your parents. And मैंने mom को बताया, and mom made all the preparations, obviously because somebody's coming to visit them. Once he arrived, everything stopped. All forms of communication stopped. We were kind of ghosted, very honestly. Months later, I asked him that, you know what, you told me even that you would meet my parents and they were waiting for you. Fatty. What happened? He's like, nee, actually, my mother had a problem with this alliance. And what is the problem? His mother states that, यार लड़की तो PhD कर रही है, किसी दिन अगर लैब में काम हुआ और ये रात को घर ना लौटे फिर, what if she doesn't want to return home? I said, if I don't come home, where else will I go? Either I'm working in the lab, or I'll be home. No, my mother has a problem. So he was himself a PhD student. Rather than understanding what another PhD student goes through, he chose to support some idiotic mindset. And he said, I'm sorry, I can't proceed. So what Renu is saying is absolutely true. Similar professions create more problems, I think. So Babli ji कह रही है कि should appreciate each other. Yeah, that's true. And Manjusha Bhadra आई हैं, and Manjusha कह रही है कि wife always becomes proud of her husband's achievement, but a husband can't take his wife earning more or she's getting praises, especially when both are in the same profession. Oh, well, okay. So same profession या same जगह पे काम कर रहे हैं. I पता नहीं मैं. मनबीर, अगर आप मान लो social circle में बैठे हो, the wife is getting complimented more than the husband. I think that is also create problem for a rift. Yeah, I'd be very proud, yaar. You know, my wife can't be proud क्योंकि मुझे कोई बोलता ही नहीं कुछ. लोग मुझे गालियां ही देते हैं पब्लिक में. तो she is very embarrassed of me. आप तो वैसे ही famous हो मनबीर. नहीं, she is very embarrassed of me कि भाई इसको तो लोग criticize करते हैं कुछ तो she. But when people say कि हाँ भाई she's very good और ऐसे, I feel very proud. मुझे लगता है मुझे ना सारे ऐसे नवरत्न मिले हैं लाइफ में, because I was speaking to somebody else. He said, I told him very clearly that, look, I am socially active, culturally active, and I like to keep it that way. That is fantastic. So he's like, what do you mean by socially active? I said, look, if I'm being invited to some of my friends, I would also like to have them over, have some dinner, some meaningful conversations on Saturday night. That is wonderful, right? Absolutely. And he's like, would you be okay if you have this gathering and I am in our room? I don't want to step out of it. I said, look, I'm absolutely okay, but I could sense कि ये बाद में this will be a problem कि यार तुम्हारे दोस्त तो सारा time घर पे आते रहते हैं. Why can't you just kind of calm down and stuff like that? And then I was again ghosted. That's a different part. I was ghosted. But yeah, this was also asked of me कि are you okay if I just not get out of the room and you host everyone by yourself? No, but look, I have heard and of especially
people from our community, जो men हैं, they feel threatened by stronger women. So I don't know if it's the same thing. I don't know if it's the same thing as feeling inferior to your partner, but some men might suffer from that. I haven't, because But Manbir, yeah. if your partner, she's socially active, what is there to be intimidated or what is there to be challenged by? She is socially, she has friends. That's it. Hmm, hmm. Yeah, I I would don't. think so. हाँ, but जो deep insecurities है अभी, but ये जो feeling inferior and also castigating your partner जी, is, I think, not good for a relationship. So if you want to nurture your relationship, you have to nurture your partner. You have to build them up. When they are down, you have to build them up. When they are up, you need to enjoy that. You need to celebrate that. फिर ही रिलेशनशिप अच्छा होगा ना. तो ये तो बेसिक रिलेशनशिप के गुड मैनर्स हैं. अगर आपको पता नहीं. आपको गुड मैनर्स नहीं है रिलेशनशिप में, तो फिर तो मुश्किल ही होगा. इनफैक्ट वी शुड ट्राई टू सेलिब्रेट एवरीबॉडीज सक्सेस यार. I personally think so. Sometimes, yes, we all get jealous. Okay, we are envious of people when some other people are successful and we are not. We might feel envious, but I think for your own mental health and for the good of society, we must try to celebrate people's success. Not easy, but it's a good aspirational thing to Yeah, achieve, I think. yeah. Yeah. And oh, so Manjusha has given me a compliment. She says that you're a good husband. Arre wah. नहीं, I'm not a good husband. I'm a good sensible man. मुझे घर में peace रखना है. मुझे घर की income ठीक रखनी है. Why will I not support my wife if she's bringing in money here? And मुझे अगर yeah, there are certain things. Sometimes she has to overwork because I'm a lazy guy. So that's my only handicap, I think. But she's happy to support me there. We need more men to be like you, Manbir. हमारे मतलब आजकल की जो gene pool है, it's just horrible. So we are going off air on 89.3. So, but we'll continue the conversation on Facebook and YouTube. So yeah, so that's gone, and yep. नहीं, I think I have seen मेरे जो circle में, yes, I have also heard when couples get divorced, then they will criticize their partners. यार वो तो काम पे ऐसे था, he was working too much, not Yeah. giving us time, या then they criticize and वो सारा निकलता है. लेकिन I think if the relationship is healthy, there is no need to feel inferior of your husband or your wife. People do, Manbir. In the end, people do. They are the inferior of their pay scale or their fame or their looks. People end up getting that mindset with their partner. And Renu has made a good point, and she says, I think insecurity, social and personal life को balance करने की होती है. Yeah, so yeah, I think so. I think लेकिन yeah. रेनू, I have this question for you. अगर दो लोग हैं, मान लेते हैं कि wife, she is very culturally, socially, she's very friendly. She has a big group of friends. लोग, she loves to have people over. लेकिन जो husband है, वो थोड़े reserve हैं. He's an introvert. उनको इतना नहीं भी चलता है. How do you balance them? As a woman, you would like to keep your friend circle, right? आपको अच्छा लगता है कि weekends पे दोस्त आए बैठे हैं, लेकिन आपके husband को नहीं जमता है. He's like, भाई मुझे अपने पे छोड़ दो. I would rather read the magazine, the newspaper, whatever. Then how do you draw the balance? But that's okay. If I was that husband who is reserved or doesn't want to go out, it's fine. No, it's not going out, Manbir. It's about having people at your place. And that's okay. You might come in and say hello and go back and do what you're doing, As long as that doesn't become an issue कि यार तुम्हारे friends हमेशा घर पे आते हैं, can you not just kind of calm down? No need of having that becomes an issue because you're trying to. But this is all. I mean, the moment you let somebody enter your life, your time to adjustment has started. Okay, anybody, whether it is a partner, whether it is kids, whether it is a guest. अगर हमारे घर में आके कोई guest overnight भी रुकता है, तो we have to make an adjustment. You have to make adjustment कि भाई आपको
You can't do the same things that you normally do. वो अगर अर्ली सोने वाले हैं तो आप म्यूजिक लगा के ऊंचा ऊंचा नहीं सुन सकते हैं. छोटी सी एडजस्टमेंट. या अगर आप Agreed, Manbir, but adjustment should not mean compromising. एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी ना, उसके बिना यू कांट वर्क. Yeah, बब्बी but जी कह रही हैं कि you- गुड थिंकिंग इज मस्ट फॉर गुड लाइफ एंड फैमिली. एब्सोल्युटली. If you can't think well, if you are obsessed with yourself, you will have a problem with anybody. Yeah. आप उसको एडजस्टमेंट बोलो कि जो भी बोलो, but if your focus is totally on your needs and yourself, then any relationship will not survive. Whether it लेकिन is जो लोग ऐसे हैं मनबीर, they are living in an illusion. उनको ये आप कैसे acknowledge करवाओगे कि yes, I am full of myself. I need to look beyond myself. and that's when these people will lose relationships, and they will and Neeraj Nanda has said something that will make you happy. He says society is pro men, and hence the problem. We are creatures of society. Yeah, so pro men. Yeah, okay, pro men. And Renu ji कह रही हैं यही तो balance बनाना होता है. Most of the people can't make it. Who does? They are winners together. Yeah, so balance करोगे तो ही रिलेशनशिप चलेंगे. अगर बैलेंस नहीं करोगे तो फिर तो दिक्कत ही आएगी. मेरा बैलेंस तो वैसे ही खराब. मैं तो साइकिल से पता नहीं कितनी बार गिर चुकी हूँ. तो मैं वेरी पुअर इन बैलेंस. चलो ठीक है. लेकिन अगर yes, it is a challenge, and I didn't realize that it's such a big issue because I have celebrated my partner's successes, and she has celebrated mine, and we have held each other when we have not been successful, when we have failed. Yeah, and she's listening, so and I tell you the truth. So yeah, so obviously if I haven't, then she'll put some comment there and say क्या बकवास कर रहा है बे, उतर निकल तू बाहर आते को दिखाता हूँ मैं. So she is not saying that as yet. So all right, what's happening on Coconut Chats? We released the second last episode of this season this Monday, Manbir. So we spoke about how cancer can be life altering. Mm-hmm. So this young lady, she had cancer in her lungs when she was pregnant, and how her life went toss is what we spoke about. So terrible. Yeah. we'll be starting next season in January. So yeah. And I hope you improve your sound. Okay. You need to improve that, and you need to do it as a podcast, not on YouTube, as a podcast. It's easier to listen to if it's a podcast. Okay. So do invest some time. It doesn't. You don't have to invest money, but just some time. Make it pretty. Put some music. Yeah. Put some good sound. Edit it. Make it crisp, and then you will find that it'll prove results. Yeah. And Manjusha कह रही है कि maximum balance the lady has to do. Okay. यार ये बड़े यार क्या बात है, एंटी मेन चल रहा है यहाँ पे आज. हैं? कि हाँ, ये मेरी बीवी भी यही बोलती है कि तुम मर्दों को this थोड़ा तो सच है. What do you guys think? She's constantly challenging me. तुम अपने आप को क्या समझते हो कि तुम मर्द हो, कुछ भी बोल सकते हो. थोड़ा तो है ये. It exists. No, I agree. And as men, as boys, we have been spoiled, especially by our mothers. Absolutely. वो पुनीत पुनिया का एक बड़ा अच्छा वीडियो है, राजा बेटा, वो जरूर देखिएगा आप. It's fantastic. And I laugh and I think and I feel embarrassed whenever I watch that video. Okay. All right, Chris. Thanks, Manbir. Don't go ghosting us, okay? Are we meeting next? We're meeting next Thursday, right? 22nd. Absolutely. Why do you ask? Okay. No, I thought maybe you're going away for Christmas and all that. अरे यार, वो जहाँ पे भी जाऊँगा वहीं से कर दूंगा यार. अच्छा ठीक है. यार हम लोगों का क्या है, हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेकर कहीं भी चले. फकीर आदमी हम, ठीक है? Nah, thank you, Manbir. चलो, thank you. You look after yourself, Chris. Have a good night. Thank you. Good night. Take care. Bye-bye. Bye. And that's Chris, Mallika Bhadra from Coconut Chats, again coming to us from Melbourne. And that's the show for tonight. I'll play some music and I'll wish you good night. Look after yourself. Watch out of the window. Relax.
काना विनती करूं दिन रे राह तके मेरे रे मनमोहन काना विनती करूं दिन रे राह तके